Hello everyone, welcome to Global Online. In this lecture, we are going to see NTI UGC NET Paper 1, and in today's lecture, we are going to discuss 50 plus most expected MCQ on People, Development and Environment Unit. So in this lecture, I have added the PYQs plus current affairs questions. So do watch this lecture to clear all your doubt about the same, and you will receive my lecture every day at 7 a.m. So do visit our channel every day at 7 in the morning and do watch this lecture to score more marks in the upcoming exam. Before we move forward, I want to tell you that we the Global Online has brought 2000 plus MCQ quick revision PDF in which you are going to get current affairs questions, previous year questions, most expected questions and most repeated questions for the paper 1, and this PDF is available just for rupees 599. To get a PDF, contact on given number. अगर आप ये पीडीएफ लेके स्टडी करते हो तो मैं श्योर हूँ कि आपको 70-75 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे और आपका पेपर 1 इजीली क्लियर हो जाएगा. What you are waiting for? Get the PDF and start your preparation today. The Kyoto Protocol was entered into force in the year. यहाँ पर आपको क्यूटो प्रोटोकॉल के बारे में पूछा गया है, वो कब एंटर हुआ फोर्स में, कौन से ईयर में. तो जिसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं 2005, second one is 1997, third one is 2000 and the last one is 2002. Kyoto Protocol is the mechanism which set the limit for the industrialized nation to reduce the greenhouse gases emission as an aim by the United Nations Framework Convention on the Climate Change. Okay, and it was adopted in 1997, but it was came into the force as a process require ratification by the 55% member state. And after the rectification of Russia in 2004, it was came into the force in 2005. Okay, रसिया के रेक्टिफिकेशन के बाद ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो 2005 में जो है वो फोर्स में आया था. The flexible market mechanism of a Kyoto Protocol talk about the trading of emission permits. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर 5. प्लीज रिमेंबर इट केम इनटू द फोर्स इन 2005, बट एनेक्ट कब हुआ? एनेक्ट हुआ 1997 में. Which of the following UN conference Sumit adopted the program of action for a sustainable development? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है दिए गए में से कौन सा जो यूएन कॉन्फ्रेंस और सुमित है जिसने कि अडॉप्ट किया था प्रोग्राम फॉर द एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसके लिए यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो है स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस, सेकेंड वन इज रियो दी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस, थर्ड वन इज जोहान्सबर्ग सुमित एंड लास्ट वन इज अहमदाबाद कॉन्फ्रेंस. ओके, कॉन्फ्रेंस मतलब कि फॉर्मल मीटिंग ऑफ द पीपल, जो कि मीटिंग ली जाती है टू डिस्कस ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ अ कॉमन इंटरेस्ट विद इन द कंपनी, इंस्टीट्यूट, स्टेट और द कंट्री. ओके, और सुमित इज अ प्री शेड्यूल्ड मीटिंग of the head of the state of or a government for a different country with the pre-arranged agenda. Okay, so यहाँ पर अगर हम बात करेंगे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की तो ये जो है it was about the human environment, first ever international level meeting about the global environment held in the Stockholm, Sweden. Okay, second one is Rio de Janeiro conference. ये जो है वो एजेंडा 21 है. (1992) Rio conference is a Earth Summit. Aim was to protect the biodiversity of the Earth. Agenda 21 in a non-binding action plan by the UN for the Sustainable Development held in Rio de Janeiro, Brazil. Okay, then is Johannesburg, the World Summit for the Sustainable Development. Please remember this.
World Summit for Sustainable Development. Aim at reducing a negative of population growth, technological and industrial advancement held in Johannesburg, South Africa. And the last one is Ahmedabad Conference. It is a 13th conference of the party COP13 of the Convention on Conservation of Migratory Species of the World Animal, February 2020, held in the Ahmedabad, गुजरात. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर बी. Rio de Janeiro conference is the correct answer here. Identify from the option given below the co-benefits of the monetary protocol. तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है co-benefits of the monetary protocol, जिसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है वो है impetus to development of energy efficient system. Second one is reduction in carbon dioxide emission. Third one is convergence of efforts of the international community in addressing the air pollution. And the last one is control of transboundary movement of hazardous waste. मॉनेटरी प्रोटोकॉल जो है वो इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो कि आया था इन 1987 में. ओके It sits under the Vienna Convention for the protection of the ozone layers. The monetary protocol is signed by 197 countries. Please remember this. Okay. And the first treaty in the history of the United Nations to achieve the universal ratification and to consider in a many most successful environment. Okay. And ये जो है वो डिजाइन किया था to stop the production and import of ozone depleting substances and to reduce their concentration in the atmosphere to help to protect the earth ozone layer. And it target the 96 ozone depleting chemical in thousands of applications across the 240 industry sector. And it also produced other significant environment benefits. Mostly, it was a benefited the global climate by reducing the amount of greenhouse gas. इसी का मतलब जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रिडक्शन इन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन. द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज लॉन्च बाय. तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो किसने लॉन्च किया है, जिसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है वो है नरेंद्र मोदी. सेकेंड वन इज नवाज शरीफ. थर्ड वन इज बराक ओबामा एंड द लास्ट वन इज जेम्स कैमरून. ओके तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो लॉन्च किया था बाय नरेंद्र मोदी ने. International Solar Alliance is an alliance of 121 countries initiated by India and was founded in the 30 November 2015 में. और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है गुरुग्राम में. एंड जो करंट डायरेक्टर जनरल जो है वो है अजय माथुर. इसी का मतलब जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी. Which of the following is one of the 6 pollutant under the Kyoto Protocol regulation? तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है इसमें से कौन सा एक है जो कि वन ऑफ द 6 पोल्यूटेंट है अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल रेगुलेशन, जिसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है वो है क्लोरीन. सेकेंड वन इज फोस्टीन. थर्ड वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड लास्ट वन इज परफ्लोरोकार्बन्स. ओके
अगर हम बात करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल की, तो ये जो है वो इंटरनेशनल अग्रीमेंट है और इसका जो एम है इज टू मैनेज एंड रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एंड ग्रीन हाउस गैस. Okay, and Kyoto Protocol is an agreement under the United Nations Framework Convention on the Climate Change, जो कि अडॉप्ट किया था इन दिसंबर 1997 में. ओके, और इंडिया ने जो है वो ये साइन किया था ऑन 26 अगस्त को in year 2002 में, and India rectified the Kyoto Protocol in 2002, and Kyoto Protocol come into the force in February 2005 में. ओके, और इसके अंदर जो 6 ग्रीन हाउस गैसेस जो आते हैं रिलेटेड है टू द ह्यूमन एक्टिविटी, वो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फर्स्ट है CO2, देन इज मीथेन है, उसके बाद है नाइट्रो ऑक्साइड, उसके बाद है परफ्लोरोकार्बन्स जिसे कि ऐसा भी लिखा जाता है, उसके बाद है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, एंड लास्ट वन है सल्फर हेक्साफ्लोराइड. ओके, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन वो होगा ऑप्शन नंबर डी. Perfluorocarbon is one of the 6 pollutants under the Kyoto Protocol regulation. Which of the following was a central aim of Paris Agreement? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सेंट्रल एम ऑफ पेरिस अग्रीमेंट का, जिसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है वो है टू रिड्यूस द CFC एमिशन, सेकेंड वन इज टू स्ट्रेंथन द ग्लोबल रिस्पॉन्स टू द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज, third one is to address the biological diversity issues, and the last one is to address the problem of ozone layer depletion. Okay, अगर हम बात करेंगे पेरिस अग्रीमेंट की, तो ये जो है वो लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रेडी ऑन द क्लाइमेट चेंज है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज टू कम्बाइट द क्लाइमेट चेंज, और ये जो है वो अडॉप्ट किया था बाय 196 पार्टीज in the Paris on 12 December 2015 में, and enter into the force on 4th November 2016 में. Okay, the limit global warming to well below the preferably 1.5 degrees Celsius compared to the pre-industrial level, reach the global peaking of a greenhouse gas emission as soon as possible to achieve the climate natural world by mid century. ये जो है वो इसके गोल्स है. इसी का मतलब यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी. बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट रिफर्स टू, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट के बारे में पूछा गया है, जिसके लिए यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो है important spot for a biological point of view, second one is spot where the environment has reached the dangerous level, third one is place where the temperature is very high, and the last one is place where the biodiversity is very safe. Okay, biological hotspot ये जो है इसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी कहते हैं. To qualify the biodiversity hotspot, the region must meet two strict criteria. The first one is it must have at least 1,500 vascular plant as a endemic, which is to say it must have a high percentage of a plant life found nowhere else on the planet. And second one is it must have a 30% or less of a original natural vegetation. 30% or less. A biodiversity hotspot is a biogeographic region with a specific level of a biodiversity that is a threat of a human habitation.
The term biodiversity hotspot specially refer to the 25 biological rich area around the world that has lost least the 70% of their original habits. तो इसी का मतलब यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी. Biological hotspot refer to the spot where the environment has reached dangerous level. Which city was ranked first in India in the EIU Global Livability Index 2022? तो यहाँ पर आपको कुछ cities के नाम दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है given which city was ranked first in the India's EIU Global Livability Index 2022. इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है वो है बेंगलुरु, सेकेंड वन इज न्यू दिल्ली, थर्ड वन इज मुंबई एंड लास्ट वन इज चेन्नई. EIU, that is European Intelligence Unit, recently released the Global Livability Index 2022, which ranked 173 cities on the basis of their living condition. And there are 5 Indian cities, that is Delhi, then there is Mumbai, then there is Chennai, Ahmedabad and Bangalore. Which were included in that list, and the Delhi was ranked the best, that is 140 rank, followed by the Mumbai, that is 141, then there is Chennai, that is 142, then Ahmedabad 143, and Bangalore was the last of India's cities at 146. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, that is New Delhi. Which of the following is the central aim to strengthen the global response to the threat of climate change by keeping the global temperature raised this century well below the 2 degree Celsius of which conference? तो जिसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है वो है क्योटो प्रोटोकॉल, सेकेंड वन इज पेरिस अग्रीमेंट, थर्ड वन इज मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल एंड लास्ट वन इज रियो सुमित. ओके, सो रियो सुमित को अर्थ सुमित भी कहते हैं. Was United Nations Conference on Environment and Development. Okay, and it produced the long range report and execution plan that continues to serve a guidance for the international action on the environmental issues, include the World Summit on the Sustainable Development, okay, and the Kyoto Protocol. Then is Montreal Protocol. ये जो है वो ग्लोबल अग्रीमेंट है. To protect the earth ozone layer by phasing out the ozone depleting chemical. और ये जो है वो इंक्लूड करता है प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल. और ये जो है वो साइन हुआ था इन ईयर 1987. ओके, और एनेक्टेड हुआ था इन ईयर 1989 में. उसके बाद अगर हम बात करेंगे पेरिस अग्रीमेंट की, जिसे कि COP21 कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, which led to the International Climate Agreement to keep a global warming below the 2 degree centigrade prior pre-industrial level. Okay, and the last one is Kyoto Protocol. It is a United Nations agreement that binds the signatory nation to reduce their greenhouse gas emission. Okay, and it was a sign by most nations at the 1997 Earth Summit. United States of America is non-signatory of this agreement, and it provides the monetary reduction target for 6 greenhouse gas by
2012। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पेरिस अग्रीमेंट इज द करेक्ट आंसर हियर. So here is the question. In which year did the word sustainable development came into existence? So in this question they ask you about the sustainable development. जो sustainable development word था वो कब आया? Okay? और इसके लिए जो first option है वो है 1992, second one is 1978, then is 1980 and then is 1987. Sustainable development is an organizing principle for meeting the human development goal. Okay? Sustainable development जो है वो organizing principle है for meeting the human development goal. While also sustaining ability of natural system to provide the natural resources and ecosystem services on which the economy and the society is depend. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर सी. In 1980, the word sustainable development came into existence. Which of the following is not a sustainable development goal targeted to be achieved by 2013? तो प्लीज रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली. तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है दिए गए में से कौन सा एक है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है टारगेटेड टू बी अचीव बाय 2013. अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर दो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको सीधा सा पूछा गया है दिए गए में से कौन सा एक है जो कि गोल नहीं है, और जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है वो है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका टारगेट क्या है, मतलब कि कब तक वो अचीव करना चाहिए. तो इसके लिए जो आंसर होगा वो होगा 2030. ओके. सो जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से फर्स्ट ऑप्शन है जेंडर इक्वालिटी, सेकेंड वन इज जीरो हंगर, थर्ड वन इज गुड हेल्थ एंड द वेलबींग, एंड द लास्ट वन इज space research. If we see here, in September 2015 में the General Assembly of United Nations adopted 2030 Agenda for the Sustainable Development, which include the 17 different Sustainable Development goals. Okay, now what are these goals? Different 17 goals, right? That you have to remember here. The first one is no poverty. Okay, second one is zero hunger. Third one is good health and well-being. Then there is quality education, gender equality is there, clean water and sanitation is there, affordable and clean energy is included here. Then is decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure is included. Then there is a reduce the inequalities. Then there is sustainable cities and communities. Then there is a responsible consumption and production is there, climate action is there, life below water is there, life on land is there, 16 one is peace, justice and strong institution is there, and the last one is partnership for the goal. So these are the 17 different goals of a sustainable development which you have to remember. Please remember all the things in the sequence. Okay. Gender equality, zero hunger and good health and well-being, all these three things are included under the sustainable development goals, but space research is not included here, right? So the correct answer for this question will be option number D. Where was the sustainable development explained for the first time? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो कहाँ पर एक्सप्लेन किए थे फर्स्ट टाइम. तो जिसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है वो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, देन देयर इज ब्रूंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, थर्ड वन इज फर्स्ट अर्थ सुमित रिपोर्ट, एंड लास्ट वन इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो डेवलप हुए थे फर्स्ट टाइम इन द ब्रूंटलैंड कमीशन रिपोर्ट जो कि आया था इन 1987 में. ओके. द ब्रूंटलैंड रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन ऑन द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट
ओके, सो किसने पब्लिश किया था? बाय द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट. And according to a report, the sustainable development is a development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ब्रुंटलैंड कमीशन रिपोर्ट. ओके, अगर हम बात करेंगे अर्थ समिट रिपोर्ट की, तो ये जो है वो आया था इन द रिवो दे जेनेरियो में इन जून 1992 में. प्लीज रिमेंबर दिस, क्योंकि यहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है इस पर. ओके, which of the following watershed development project is sponsored by the central government aimed at enabling the rural population to conserve water? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है दिए गए में से कौन सा जो है वो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो कि स्पॉन्सर किया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एम एट अनेबलिंग द रूरल पॉपुलेशन टू कंजर्व वाटर. जिसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है वो है अरवरी पानी संसद, second one is हरियाली, third one is जल क्रांति अभियान एंड लास्ट वन इज नीरू मुरू. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हरियाली. हरियाली जो है वो वाटरशेड डेवलपमेंट एंड द मैनेजमेंट प्रोग्राम है जो कि इम्प्लीमेंट किया था बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट ने. ओके, एंड द प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एट द ग्राम पंचायत लेवल. इसका जो मेन मोटिव था ऑफ हरियाली प्रोग्राम वो था हार्वेस्टिंग द एवरी ड्रॉप ऑफ रेन वाटर फॉर द पर्पज ऑफ इरिगेशन, प्लांटेशन एंड क्रिएट द सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम फॉर द विलेज कम्युनिटी एज वेल एज फॉर द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई. सेकेंड इसका ऑब्जेक्टिव था ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ रूरल एरिया बाय क्रिएटिंग अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द पंचायत फ्रॉम द रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड द मैनेजमेंट. Third one is employment generation and a poverty alleviation in the rural area. Then is all district level shall be a notable authority for the implementation of all the area development program under the supervision and the guidance of the state government and the government of India. और जो था the meeting of a gram sabha, ward sabha shall be convened for the preparation of a action plan, watershed treatment plan. Okay. अगर हम बात करेंगे नीरू मुरू की, तो ये जो है वो आंध्र प्रदेश में ये प्रोग्राम किया गया था. वॉज टेकन अप फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वेरियस वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, डग आउट द पॉन्ड, चेक द डैम्स थ्रू द पीपल पार्टिसिपेशन. और फर्स्ट वन जो है अरवरी पानी संसद, ये जो है वो एसोसिएट किया था इन राजस्थान. The discussion on sustainable development was started after submitting the report on environment to be United Nations in 1987. The report was जो sustainable development था उसका जो डिस्कशन हुआ था वो स्टार्ट हुआ था आफ्टर सबमिटिंग द रिपोर्ट ऑन द एनवायरमेंट टू द यूनाइटेड नेशन इन द 1987. तो यहाँ पर आपको जो रिपोर्ट सबमिट किया था उसके बारे में पूछा गया है, वो रिपोर्ट कौन सा था. ओके, जिसके लिए आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो है फर्स्ट रिपोर्ट ऑन द क्लाइमेट चेंज, सेकेंड वन इज अवर कॉमन फ्यूचर, थर्ड वन इज सेकेंड रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड लास्ट वन इज फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट. तो अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो जो डिस्कशन था सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो स्टार्ट हुआ था आफ्टर सबमिटिंग द रिपोर्ट ऑन द एनवायरमेंट टू द यूनाइटेड नेशन इन 1987 and the report was our common future. Okay, and
इसी रिपोर्ट को हम ब्रूनलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं. प्लीज रिमेंबर दिस नेम. The definition of a sustainable development was given by the Brundtland Commission. It was released in 1987 by the World Commission on the Environment and Development. World Commission on Environment and Development. इसी का मतलब जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अवर कॉमन फ्यूचर. Which of the following was not a Millennium Development Goal? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दिए गए में से कौन सा एक है जो कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नहीं है, जिसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है वो है इराडिकेट एक्सट्रीम पुअर्टी एंड हंगर, सेकेंड इज इम्प्रूव द मैटरनल हेल्थ, third is ensure healthy life and promote the well-being for all at all the ages, and the last one is ensure environmental sustainability. To answer this question, you should know the different goals of millennium development. So here are the different goals of millennium development, जिसमें कि 8 different goal है, जिसमें first आता है eradicate extreme poverty and hunger. You can see here. Second one is achieve universal primary education. Third one is promote gender equality and empower women. Fourth one is reduce the child mortality. Then there is improve the maternal health. Then is combat HIV or AIDS, malaria and other diseases. Then there is ensure environmental sustainability. And last one is a global partnership for the development. Please remember all these goals and please remember in the sequence. Okay. तो अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन जो ए, बी एंड जो डी है वो तो गोल्स है मिलेनियम डेवलपमेंट के, राइट. बट जो सी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये जो है वो गोल नहीं है मिलेनियम डेवलपमेंट का. Millennium Development Goal of a global partnership for a development envisages making available the benefit of new technology, especially which of the following. इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थर्ड वन इज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड लास्ट वन इज सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी. ओके. इंटरनेशनल डेवलपमेंट is a multidisciplinary context of a human development which seek to implement a long-term solution to the problem by helping the developing country create a necessary capacity needed to provide such a sustainable solution to their problem. On such a program was the Millennium Development Goals. अगर हम बात करेंगे गोल की, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की, तो ये जो गोल जो है उसका ये है टू एनकरेज द डेवलपमेंट बाय इम्प्रूविंग द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन. इन द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज. यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर ए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इज द करेक्ट आंसर हियर. Under Goal 4 of Millennium Development Goal, the reduction sought to be achieved in under the 5-child mortality rate between the 1990 to 2015 was to be extended off. इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है वो है हाफ, सेकेंड वन इज 2/3, थर्ड वन इज 3/4 एंड लास्ट वन इज 1/3. ओके. तो जो मिलेनियम डेवलपमेंट का जो फोर्थ गोल है वो कौन सा है? वो है reduce the child mortality. Please remember all the goals in a sequence. Which one is the goal 1, which one is the goal 2, because if you receive the question directly on goal number then you must prepare for that. Okay. And because of that you have to remember all the goals in the sequence.
So target 5 stated that child mortality reduced by the 2/3 between the 1990 to 2015 under the 5 child mortality rate. Okay, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2/3. टारगेट्स ऑफ गोल 7 ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आर, इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है वो है कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, देन इज यूनिवर्सल एक्सेस टू मॉडर्न एनर्जी, देन देयर इज इंक्रीज ग्लोबल परसेंटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, देन इज मिटिगेटिंग एयर पोल्यूशन, एंड देन there is double the improvement in the energy efficiency. इसके लिए आपको कुछ कोड दिए गए हैं जिसमें से आपको जो करेक्ट कोड है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है. So all the United Nations Millennium Summit 2000, the Millennium Development Goals are adopted, which have set up the 8 International Development Goals for the year 2015, and these are the measurable and time-bound goals for addressing the several poverty in all its forms while also fostering the gender equality, education, environmental sustainability. Okay, the target of a 7 goal of the Millennium Development Goals are ensure that everyone has access to the affordable, dependable, and advanced energy services by 2030. Okay. The second one is increase the contribution of the renewable energy. Increase contribution of renewable energy. To the global energy mix by the significant amount by 2030. By 2030, the global pace of increase in energy efficiency will have a double. Then there is enhance the international collaboration by 2030 to research and clean energy technology. And the last one is expand the infrastructure and the technology to provide a modern and a sustainable energy services to all the developing nation. So the according to explanation जो correct answer होगा यहाँ पर वो होगा option number D, that is universal access to modern energy will be included here, increase the global percentage of renewable energy will also included, and double the improvement in the energy efficiency will also included here. The time frame for the implementation of Millennium Development Goal was, तो यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम के बारे में पूछा गया है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जिसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है वो है 2000 to 2005, सेकेंड वन इज 2000 to 2015, थर्ड वन इज 2005 to 2010, एंड द लास्ट वन इज 2000 to 2012. Okay, so the Millennium Development Goal, these are the driven from the United Nations Millennium Declaration and signed some specific target and indicators. So we know the different goals of the Millennium Development, right? So the Millennium Development Goals are interdependent, and all the Millennium Development Goals are influence the health, and the health influence the Millennium Development Goal. For example, the better health enable the children to learn and adult to earn. So all the 191 United Member States had agreed to try to achieve this 8 goal by year 2015. So there are 191 UN members who decided, who agreed to achieve this all the 8 goal by 2015. And in 2016, the Sustainable Development Goal succeeds the Millennium Development Goals. तो जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2000 to 2015. How many national mission of Indian government are there to address the problem of climate change? So in this question they ask you about the national mission of Indian government to address the problem of the climate change. और इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है वो है 6, सेकेंड वन इज 8, थर्ड वन इज 12, एंड द लास्ट वन इज 17.
Climate change is one of the most critical global challenge of our time. The India has taken the several domestic initiatives to address the climate change. National Action Plan on the Climate Change, that is NAPCC, launched the Prime Minister Council on the Climate Change in year 2008, and it was implemented by the government to support the domestic action for the adoption and mitigation. Okay. So here you can see the national mission of the Indian government, in which it includes the solar mission is there, then the mission for enhanced energy efficiency, mission for sustaining the Himalayan ecosystem, mission on strategic knowledge for climate change, mission for sustainable agriculture, then mission for green India, water mission is there, and mission on sustainable habit. So there are 8 different missions which is governed by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसी का मतलब यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर बी. सो 8 इज द करेक्ट आंसर हियर. Which of the following is not one of the mission under the National Action Plan on Climate Change? तो यहाँ पर आपको कुछ मिशंस के नाम दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है इसमें से कौन सा एक है जो कि मिशन नहीं है अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन द क्लाइमेट चेंज. जिसके लिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है वो है नेशनल वाटर मिशन, सेकेंड वन इज नेशनल मिशन ऑन एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, third one is Green India Mission, and the last one is National Mission on the Solid Waste Management. Okay, so National Mission on the Solid Waste Management is not one of the mission under the National Action Plan on the Climate Change. The National Action Plan on the Climate Change, which is also known as NAPCC, identify, measure, promote the development objective while also yielding the co-benefit for addressing the climate change. And there are 8 national missions which is from the core of a national action plans. So I have already explained you the different missions of the national action plan on the climate change. So according to explanation जो correct answer होगा यहाँ पर वो होगा option number D, that is National Mission on the Solid Waste Management is not a mission under the National Action Plan on the Management Change. Green India Mission, National Mission on Energy Efficiency Improvement, and the Water Mission, these are included under the National Action Plan on the Climate Change. Under Green India Mission, how many hectares of degraded forest land is to be brought under the afforestation? Okay, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है under the Green India Mission, how many hectares of degraded forest land is brought under the afforestation? जिसके लिए जो first option यहाँ पर है वो है 2 million hectare, second one is 6 million hectare, third one is 8 million hectares, and the last one is 20 million hectares. Okay, so the National Action Plan on the Climate Change, that is NAPCC, launched by the Prime Minister Council on the Climate Change, और ये जो है वो कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था in year 2008 में, and it was implemented by the government to support the domestic action for the adoption and mitigation. Okay, so the national mission for a Green India or a Green India mission, that is GIM, means the Green India Mission. It is one of the 8 missions outlined under the National Action Plan on the Climate Change, launched in the February 2014. Okay, please remember this. ये कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था फरवरी 2014 को, एंड इसका जो एम था वो था प्रोटेक्टिंग, रिस्टोरिंग एंड एनहेंसिंग द इंडियाज डिमिनिशिंग फॉरेस्ट कवर एंड responding to the climate change by combination of adoption and mitigation measures. And it also aimed at the afforestation of 6 million hectares of degraded forest land and expanding the forest cover from 23 to 33% of India's territory. Okay, 23 to 33%.
इसी का मतलब यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 6 मिलियन हेक्टर्स. By the year 2022, the Climate Change Action Plan of a Government of India aim at installing. तो यह इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है वो है 50 गीगावाट ऑफ विंड पावर. सेकेंड ऑप्शन इज 100 गीगावाट ऑफ विंड पावर. थर्ड वन इज 175 gigawatt of renewable energy, and the last one is 150 gigawatt of renewable power. Action National Action Plan for a Climate Change is the Government of India program जो कि लॉन्च हुआ था इन ईयर 2008 में, और इसके जो थे 8 सब मिशन थे. ओके एंड इसका जो एम था वो था मिटिगेशन एंड अडॉप्शन ऑफ एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट चेंज. Okay, the plan aim of fulfilling the India's developmental objective with a focus on reducing the emission intensity of its economy. The government of India has set up the target of installing the 175 gigawatt of renewable energy capacity by the year 2022, and this include 100 gigawatt from the solar and 100 from the solar and 60 gigawatt from the wind and 10 from biopower and 5 gigawatt from small hydro power. Okay, so the India intended nationally determined contribution aim to base 40% of total installed power generation capacity on non-fossil fuel resources by 2030. So यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल पावर. Which of the following acts gives right to citizen to file a case against the violation of environmental norms? तो यहाँ पर आपको कुछ एक्ट्स के नाम दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है इसमें से कौन सा जो एक्ट है जो कि राइट देता है सिटीजन्स को टू फाइल द केस अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ एनवायरमेंटल नॉर्म्स. इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है वो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. सेकेंड वन इज एयर पोल्यूशन एक्ट. Then there is Water Pollution Act, and last one जो है वो है Forest Act. Okay, so the Forest Act is enacted in 29 December 2006 को. Okay, और ये जो है वो फोर्स में आया था 31 दिसंबर को in year 2007 में. It deal with the right of community that dwell in the forest, our land and our other resources. उसके बाद अगर हम बात करेंगे वाटर पोल्यूशन की, तो वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974. The government of India has passed the Water Pollution Act in year 1974 to safeguard our the water resources. उसके बाद है एयर पोल्यूशन एक्ट. ये जो है वो आया था इन 1981 में. In India, the Air Pollution Act came into year 1981 and it was amended in 1987 to include the noise as well as the air pollutant. और उसके बाद है Environment Protection Act. Environment Protection Act 1986 is an act of the Parliament of India. In a wake of Bhopal gas tragedy or a Bhopal disaster, the Government of India enacted the Environment Protection Act of 1986 under article, please again remember the article, that is 253, okay, of the Constitution, passed in March 1986 and came into the force on 19 November 1986 को, and it has a 26 section and 4 chapter. Okay,
So the Environment Protection Act gives a right to the citizen to file the case against the violation of environmental norms. इसी का मतलब जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर वो है ऑप्शन नंबर ए, एनवायरमेंट एक्ट. नेशनल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज अ पास इन इंडिया इन विच ईयर. तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो नेशनल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है वो इंडिया में कब पास हुआ. ओके जिसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है वो है 1974, सेकेंड वन इज 1981, थर्ड वन इज 1986 एंड द लास्ट वन इज 1995. द नेशनल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ये जो है वो पास हुआ इंडिया में इन ईयर 1986 and it was a pass primarily for the purpose of ensuring the prevention and enhancement of the environment as well as for the issue related thereto. The first draft of Indian Constitution did not include any provision for the prevention of the environment. However, the protection of an environment, including the forest, lakes, rivers, and wildlife was mandated as a one of the fundamental duties which were added by 22nd Amendment. To the Constitution. इसी का मतलब यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, that is 1986. The National Environmental Protection Act was a pass in India in 1986. As per the Environment Ministry report, how many funnel species were added by India in 2021? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री रिपोर्ट के अनुसार कितने फ्यूनल स्पीसीज जो है वो ऐड किए गए थे इंडिया के द्वारा इन 2021 में. तो इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है 54, देन इज 240, देन इज 540 एंड द लास्ट वन इज 1050. The detail of new discovery and a new record of a flora and a fauna were published by Bhupendra Yadav, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एट द जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, कोलकाता. ओके environment, forest and climate change at Zoological Survey India of India. Kolkata. India added 240 species to its faunal database in 2021, taking the total number of animal species to 1,03,258. ओके मतलब कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 540 faunal species were added by India in 2021 as per the Environment Ministry report. The dominant source of pollution due to oxide of nitrogen in the urban area is. ये जो क्वेश्चन है वो 2017 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था जहां पर आपको डोमिनेंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन पूछे गए थे ड्यू टू द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन. कहां पर? इन दी अर्बन एरिया. और इसके लिए जो ऑप्शंस दिए गए थे उसमें से एक ऑप्शन था पावर प्लांट. पावर प्लांट इज ऑल्सो नोन एज पावर स्टेशन. ओके पावर प्लांट को पावर स्टेशन भी कहते हैं. Power station is an industrial location that is utilized for the generation and the distribution of the electric power on the mass scale. Then is energy used in the industry. Energy used और industrial energy जो कि अलाउ करती है इंडस्ट्री को टू एक्सट्रैक्ट द रिसोर्सेज एंड टू प्रोड्यूस द गुड, जिससे कि हम इंडस्ट्री जो है वो गुड प्रोड्यूस कर सकती है. ओके फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द फिनिश गुड.
Then is commercial sector. Commercial sector means the business, industry and a manufacturing enterprise operating for the profit. Which is operating for what? Which is operating for the profit. Commercial sector means the business, industry or a institution, public organization. Okay. And last option is road transport. The traffic is a major source of nitrogen oxide, especially in the urban area where the traffic density is the high. The dispersion of a nitrogen oxide in the urban area is governed mainly by a wind condition. In the street chaos, the wind generate the which lead to the consideration differences in the concentration level of a टू साइड ऑफ द स्ट्रीट. ओके. और जो ट्रैफिक जो होता है वो रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर ही आता है. इसका जो मेजर कॉस्ट है नाइट्रोजन का, ओके, नाइट्रोजन ऑक्साइड का, वो क्या है? वो है ट्रैफिक. तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर वो होगा ऑप्शन नंबर ए. That is, the dominant source of pollution due to the oxide of nitrogen in the urban area is road transport. Here is the question. Which of the following type of natural disaster has no definite beginning and end? और ये जो क्वेश्चन है वो 2018 में पूछा गया था, जहां पर आपको कुछ नेचुरल डिजास्टर के टाइप दिए गए थे और आपको पूछा गया था इसमें से कौन सा एक है जिसे कि डेफिनेट बिगिनिंग और एंड नहीं होता है. ओके. और इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है वो है अर्थक्वेक, मतलब कि भूकंप. ओके. इट कॉज द ग्रेटेस्ट लॉस ऑफ लाइफ. ओके. जब भी ये आता है तब क्या होता है? ग्रेटेस्ट लॉस ऑफ लाइफ. While the powerful were deadly because of proximity to either heavily polluted area or the ocean, where the earthquake often created a tsunami that has devastated the community thousands of kilometers away. The second option here is landslide. The movement of rock on the slope downward is called a landslide. जब भी movement होते हैं rock में on the down slope, okay? It is type of the mass wasting. Please remember this. It is a type of the mass wasting. The third option given is hurricanes. Now what is a hurricanes? It is happening because of the wind. ये क्यों होता है? ये होता है because of the wind. The produced wind of 119 km per hour or the higher, and that faster than the cheetah, the fastest animal on the land. And the last option is drought. A drought मतलब कि सूखा पड़ना, जहां पर पानी की कमतरता होना. ओके. अगर मानो रेन नहीं आ रही है तो इस वजह से भी वो ये हो सकता है. The drought is a period is a unusually constant of a dry weather due to the insufficiency of a water supply surplus and underground. The drought is a natural hazard. ये जो है वो natural hazard है. It is a slow onslaught and evolve the over month or even a year, and it may affect the large region. Okay, it may affect the large region and cause the lethal structural damage, crop, municipal water supply and a wildfire or a wildlife. तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी. Which of the following is considered as a major source of pollution in the river of India? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है दिए गए में से कौन सा एक है जो कि मेजर सोर्स है पोल्यूशन का इन द रिवर ऑफ इंडिया में. इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है ऑयल स्पिल. ऑयल स्पिल जो है वो है एक्सीडेंटल डिस्चार्ज ऑफ ऑयल फ्रॉम द वेरियस सोर्स सच एज ऑयल टैंकर, ऑफशोर ऑयल माइनिंग और ऑयल एक्सपोजर ऑपरेशन. ओके. ये जो है वो एक्सीडेंटल डिस्चार्ज ऑफ ऑयल. सेकेंड ऑप्शन जो है वो है इंडस्ट्रियल वेस्ट. जो भी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर करती है लाइक सोप
और अ डिटर्जेंट और अ केमिकल, और जिसका जो वेस्ट होता है वो पानी में छोड़ दिया जाता है, उसे ही इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर कहते हैं. ओके, देन इज एग्रीकल्चर रन ऑफ. When we say the agriculture runoff, it is referred to the pesticide or a inorganic of fertilizer used in the agriculture land. Okay, that runoff pollute the fresh water on the massive scale, and then this pollutant ultimately find their way to the ocean. And last option is sewage. Sewage मतलब कि domestic sewage include the liquid waste from the kitchen or a toilet, और जो वेस्ट हम जो है वो पानी में छोड़ देते हैं. ओके, दैट इज कॉल्ड अ सेवेज वेस्ट, एंड इट कॉज ड्यू टू द इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द सेवेज. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, that is agriculture runoff is considered as a major source of pollution in the river of India. Which of the following pollutant is a major cause of respiratory diseases? ये जो क्वेश्चन है वो 2017 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, जहां पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए थे और आपको पूछा गया था इसमें से कौन सा एक है जो कि मेजर कॉज है ऑफ द रेस्पिरेटरी डिसीजेस. इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है वो है सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स, सेकेंड वन इज नाइट्रोजन ऑक्साइड, थर्ड इज कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड लास्ट वन इज वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट. वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट जिसे VOC भी कहते हैं, मतलब कि ये जो है वो उसका शॉर्ट फॉर्म है, emitted the gases from a certain solid and a liquid. Solid and liquid, और जो कि इंक्लूड करता है वैरायटी ऑफ केमिकल्स एंड सम ऑफ विच मे हैव अ शॉर्ट और अ लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ. देन इज कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो कलरलेस होती है, and it lower the amount of the oxygen which enter into our body, and it can slow our reflexes and make us confused and sleepy. Then is nitrogen oxide. Nitrogen oxide are the gaseous component consisting of the nitrogen and oxygen. And the last option is suspended fine particles. Suspended fine particles, it consists of the solid in the air in the form of the smoke, dust, vapors which remain suspended for an extended period, and also the main source of heats which reduce the visibility. The finer of this particle, when the breathe, it can load in our lungs and cause the lung damages and a respiratory problem. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन नंबर 1. सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स आर द मेजर कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीजेस. Which of the following pollutant gas is not produced both naturally and as a result of a industrial activity? ये जो क्वेश्चन है वो 2017 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, जहां पर आपको कुछ पोल्यूटेंट गैसेस दिए गए थे और आपको पूछा गया था इसमें से कौन सा एक है जो कि प्रोड्यूस नहीं होता है बिकॉज ऑफ बोथ नेचुरली एंड अ रिजल्ट ऑफ अ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी. इसके लिए जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है कार्बन मोनोऑक्साइड. अगर हम बात करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड की तो इसे CO कह के भी लिखा जाता है. ओके, मतलब कि इसका जो फॉर्मूला है वो CO है, और ये जो है वो कलरलेस गैस है और टेस्टलेस गैस है. ओके, एंड दिस टॉक्सिसिटी मेक दिस गैस इन एन air pollutant which is produced because of the incomplete burning of hydrocarbon like fuels like oil or natural gases. उसके बाद है मीथेन. मीथेन जो है वो केमिकल कंपोनेंट है जिसका जो फॉर्मूला है वो है CH4, एंड ये जो है वो ग्रुप ऑफ 14 hydrate, the simplest alkane and the main consistent of the natural gas. उसके बाद है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका जो फॉर्मूला है वो है NO2.
Nitrogen dioxide is a gaseous air pollutant and it is produced by the combustion of the fossil fuel. And last one is chlorofluorocarbon. Chlorofluorocarbon, which is also known as CFC, are the components that have been released into the atmosphere and have various applications such as in the air conditioning, refrigerator, blowing the agent in flame, inclusion and a packaging material, and as a solvent, and it is not produced by both naturally and as a result of industrial activity. तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन. One of the following waste is not under the hazardous one. So यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा ऐसा वेस्ट है जो कि hazardous वेस्ट नहीं है. Okay. For this the options given are agriculture, recite, second option is chemical, third option is paint, and the last option is electroplating waste. Hazardous waste are those that may contain the toxic substances, okay, generated from the industry, hospital, and some type of household waste. Hazardous waste are the waste with the properties that make them dangerous and potentially harmful to the human health and the environment. Hazardous waste जो होता है वो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है उसमें, जो कि इंडस्ट्री, हॉस्पिटल और सम टाइप ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट भी उसमें इंक्लूडेड होता है. ओके, जो कि ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट के लिए डेंजरस होता है. यहाँ पर जो एग्रीकल्चर रिसाइड है वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा अंडर द hazardous वन. ओके, बट केमिकल, पेंट एंड electroplating waste will be included under the hazardous one. Okay, so agriculture waste is the fraction of the crop that does not constitute the harvest itself. The recite derived from the forest maintaining and from the industry processing of both the agriculture and the forestry resources should also be considered under this classification. Which of the following are the reason or a factor for exposure of benzene pollution? For this, the first option is automobile exhaust, second option is tobacco smoke, third option is wood burning, fourth option is using varnished wooden furniture, and last option is using product made up of polyurethane. And from this code you have to select the correct option. So here the benzene is a chemical that is a colorless or a light yellow liquid at the room temperature. Okay, ये जो है वो एक केमिकल है जो कि कलरलेस होता है और लाइट येलो कलर लिक्विड होता है at the room temperature. It has a sweet odor and it is a highly flammable. Natural sources of benzene include the volcanoes and the forest fire. Benzene is also the natural part of crude oil, gas oil, and the cigarette smoke. Some industries use the benzene to make other chemicals that are used to make a plastic and the nylon and synthetic fiber. Benzene is also used to make some type of rubber, drugs, and pesticide. The correct answer for this question will be option number 4. That is, all the options given here will be included under the benzene pollution. That is A, B, C, D and the E. Okay. यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो असर्शन और रीजन के ऊपर बेस है. जो असर्शन है वो कहता है इंडोर एयर पोल्यूशन इज अ सीरियस हजार्ड, और इसके लिए जो रीजन है वो कहता है द डिस्पोजल ऑफ एयर पोल्यूटेंट इज रेदर लिमिटेड इन द इंडोर एनवायरमेंट. और ये जो क्वेश्चन है वो 2018 में पूछा था. ओके, और इसके लिए आपको कुछ ऑप्शंस दिए थे जिसमें कि फर्स्ट ऑप्शन था बोथ द ए एंड आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए. सेकेंड इज both the A and R are true and R is not the correct explanation of the A. Third is A is the true and R is the false. And last one is both A and R are the false.
The potential source of the indoor air pollution include the central heating, cooling, household cleaning and maintenance product, outdoor sources such as a pesticide, biological contaminant such as a animal dander, mold and a cockroaches, dry cleaner clothing, tobacco smoke. Okay? तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट बोथ ए एंड आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए. How is the National Green Tribunal, that is NGT, is different from the Central Pollution Control Board, that is CPCB? So यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंट पूछा गया है बिटवीन द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एंड द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. For this, the first statement is the NGT has been established by an act, whereas the CPCB, that is Central Pollution Control Board, has been created by an executive order of the government. और जो second statement है वो है the NGT provide environmental justice and help reduce the burden of litigation in the higher courts, whereas the Central Pollution Control Board promote the cleanliness of the stream and well and aim to improve the quality of the air in the country. And from this statement you have to select the correct one, and for this here the code, you have to select the correct code here. The NGT provide the environmental justice and help reduce the burden of the litigation in the higher court, whereas the CPCB promote the cleanliness of the stream and a well and aim to provide the quality of the air in the country. Both are the statutory body. NGT is the established under the NGT Act, that is NGT Act 2010, and the Central Pollution Control Board is established under the Water Act 1974. So according to explanation, यहाँ पर जो correct answer होगा वो होगा option number 2. मतलब कि जो statement B है वो यहाँ पर correct है. Which one of the following is not the site for in situ method of conservation of flora? For this, the options given are biosphere reserves. Biosphere reserves are the representative part of natural and cultural landscape extending over a large area of coastal marine ecosystem or a combination thereof, and representative example of biogeographic zone. Second option is botanical garden. Botanical garden or botanic garden is a garden dedicated to the collection, cultivation, preservation and display of especially the wide range of the plants which are typically labeled with their botanical names. Then is national park. National park is the used for the conservation purpose created and protected by the national government. Often it is a reserve of a natural, semi-natural or a developed land, that is several stage clears or a own. Although the individual nation designate their own national park differently, there is a common idea, the conservation of the wild nature for a prosperity and as a symbol of national pride. And the last option is wildlife sanctuary. So when we are talking about a wildlife sanctuary, it is a protected area of the importance for a flora, fauna or a features of geological or a other interest, which is a reserve and manage for the conservations and to provide the opportunity for the study or the research. So in situ conservation, the conservation of species in their natural habitat is considered the most appropriate way of conserving the biodiversity. For example, the national park, wildlife sanctuary, biosphere reserves. Ex situ conservation is the prevention of a component of biological diversity outside their natural habitat. For example, the seed park, zoo, botanical garden will be included under this.
That means the correct answer for this question will be option number 2. That is, botanical garden is not a site for in situ method conservation of flora. Consider the following, that is carbon dioxide, oxide of nitrogen, oxide of sulfur. Which of the above is or are the emissions of the coal combustion at the thermal power plants? For this they given you the code and you have to select the correct code from this code. So there are several pollutants emitted into the air from the coal power plant, and this include sulfur dioxide, that is SO, then is carbon monoxide CO, oxide of nitrogen and ozone. Suspended particles matter, lead and non-methane hydrocarbon are also released. The correct answer here is option number 4. That is, all three options will be included here. That is carbon dioxide, oxide of nitrogen and oxide of sulfur. The red data books published by the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources contain list of. So here यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको रेड डेटा बुक्स के बारे में पूछा गया है जो कि पब्लिश किया था by International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources. For this there are 4 options given. The first one is endemic plant and animal species present in the biodiversity hotspot. Second one is threatened plant and animal species. Then is protected sites for conservation of nature and natural resources in various countries. And last option is all of the above. So here the red data book is the state document, okay, which is established for the documenting the rare and endangered species of the animal, plant and fungi, as well as some species that exist within the territory of the state or the country, and it is published by the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. The correct answer here is option number 2. Okay. The red data books published by International Union for Conservation of Nature and Natural Resources contain the list of threatened plant and animal species. Amount of organic pollutants found in surface water is measured by. For this the first option is COD, that is chemical oxygen demand. So here the chemical oxygen demand is the amount of oxygen needed to oxide the organic matter present in the water. The chemical oxygen demand testing is a use to determine the amount of oxidation that will occur and the amount of organic matter in the water sample. Second option is BOD, that is biological oxygen demand. Biochemical oxygen demand is the most important and widely used environmental index for monitoring organic pollutant in the wastewater. The current international standard method is the 5-day BOD. The COD or a chemical demand is a totally measurement of all the chemicals in the water. The third option is energy efficient batteries. Battery efficiency, simply put, is the amount of energy you can get out of the battery relative to the amount of energy that puts it into it. And the last option is 3D printed structure. This 3D printed structure called a concrete, a 3D printed state using the concrete filament. It consists of a 9 separately designed column structure that were printed in the full height within the 2.5 hour and engineered without any framework, which is this column is over the 8.9 feet tall.
The correct answer here is option number 2. Amount of organic pollutant found in the surface water is measured by BOD, that is biological oxygen demand. ग्रीन इंडिया मिशन वॉज अ पार्ट ऑफ। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में पूछा गया है कि वो किसका पार्ट था। फॉर दिस द ऑप्शंस गिवन आर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। सो हियर द यूनाइटेड नेशन Millennium Declaration signed in September 2000 commit the world leader to combat the poverty, hunger, diseases, illiteracy, environmental degradation and discrimination against the women. The MDG are derived from this declaration. Each MDG has a target set for the 2015 and indicator to monitor the progress from the 1990s level. Then is River Action Plan. The second option here is River Action Plan, and this was published in 2013 and set the target of increasing the passenger journey on the Thames to the 12 million by 2020. Then there is Swachh Bharat Abhiyan. Swachh Bharat Mission or a Swachh Bharat Abhiyan or a Clean India Mission is a countries-wide compile initiated by the Government of India in 2014 to eliminate the open defecations and improve the solid waste management. It is a restructured version of the Nirmal Bharat Abhiyan launched in 2009 that failed to achieve its intended target. And the last one is National Action Plan for a Climate Change. National Action Plan for a Climate Change is the Government of India program launched in 2008 to mitigate and adapt to the adverse impact of a climate change. The action plan was launched in 2008 with the 8 sub-missions. Okay. So here the Green India Mission has been implemented since the 2014 and has been a part of a 12 and 13 national exchange plans. The cost management of the mission is explained. Next, rupees 50 crore were assigned from the National Clean Energy Fund for the implementation of the GIM in the its infancy stage in 2011. According to the explanation, the Green India Mission was a part of National Action Plan of Climate Change. So option 4 will be the correct answer here. Concentration of toxic chemicals through the food chain result into. For this, the first option is accumulation, second option is excretion, third option is biomagnification, and the last option is elimination. Biomagnification is the accumulation of a chemical by the organism from the water and food exposure that result in the concentration that is a greater than would have resulted from a water exposure only and thus a greater than accepted of the equilibrium. The correct answer here is option number 3, that is biomagnification. Concentration of a toxic chemical through the food chain result into the biomagnification. Convention on ozone depleting substances is also known as. For this, the first option is Basel Convention. Basel Convention on the control of transboundary movement of hazardous waste and their disposals and international trade in the hazardous waste and certain other waste. Second option is Montreal Protocol. Montreal Protocol on the substances that deplete the ozone layer is an international agreement made in 1987. It was designed to stop the production and import of ozone depleting substances that reduce their concentration in the atmosphere to help to protect the Earth ozone layer. Then is Ramsar Convention. Ramsar Convention on the wetland
of international importance, especially as a waterfall habitat is the international treaty for the convergence and sustainable use of wetland. And last option is Conference of the Parties. Conference of the Parties is the supreme governing body of international convention. It is a composed of representative of member state of a convention and accreditation observed. The correct answer here is option number 2, that is Convention on Ozone Depleting Substance is also known as Montreal Protocol.